माशाअल्लाह हमारे भारत के जवान समझ गए हैं, किसान भी समझ गए हैं, मगर अभी भी बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके समझ में बात नहीं आ रही है। तो उनके लिए लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, उसकी कुछ झलकियां हम दिखा रहे हैं ताकि ये जान लें कि कितने लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं इस षड्यंत्र को, इस साजिश को। Making their way along Oxford Street, many thousands of protesters, a march that spanned almost the entire length of the capital's main shopping street. This was a noisy affair, real anger here at what they see as the great COVID conspiracy. Most certainly won't share those views, but the people here believe they speak for a huge chunk of the population, railing against continued COVID restrictions, against the prospect of so-called COVID passports, and even against the wearing of face masks. Among the protesters, others who even believe the vaccine program is unnecessary and being driven by the big pharmaceutical companies. I think we've been taken over by what's becoming a totalitarian state, which is based on very bad science, in fact false science, and there's a fraud behind a lot of it. Already we're being limited with testing. You're not able to get medical treatment if you say no to testing. Some people literally do not have the ability to be tested, they have health conditions. It's just limited. This is like being in a Nazi state. And as somebody who's Jewish, I'm very aware. Yes, of course we are. We're in a prison here. People don't even realise we're in a prison. There will be many who view these images with alarm, angry at those they believe are ignorant and irresponsible. But those here believe it's others who are blind to the reality of the situation. There are multiple viewpoints here, many different concerns, but the one thing that unites everyone is the unshakable belief that the government is slowly eroding their basic freedoms. And that suspicion of the media, of big corporations, of the state was shared at demonstrations in other parts of the country. There's no doubt many of the families of the countless thousands who've died from COVID will be understandably outraged at these scenes. But the people here are unapologetic and plan to keep up their protests. Mark White, Sky News, Central London. देखिए, ये जो महामारी है कोई महामारी नहीं। जहाँ 1% लोग मरते हों उसको महामारी कह ही नहीं सकते, तो फिर इसको महामारी क्यों करार दिया गया है? और इसके पीछे महामारी करार देने के बाद आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं। तो असल में पहली बात तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक फ्लू है, खांसी किसी को होती है, बुखार किसी को होता है, या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसका नेचुरल इलाज किया जा सकता है। इस्लामी मेडिसिन के अंदर उसका नेचुरल इलाज है, 3 दिन के अंदर उसका इलाज किया जा सकता है। किसी को सांस लेने की तकलीफ हो रही है तो उसका भी इलाज हो सकता है बगैर कोई वेंटिलेटर के। कोई मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है जो हार्मफुल हो। सिर्फ कुछ चीज़ें इस्लाम ने हमें जो बताई हैं उसको क्या करेंगे, और जिस तरह से रेस्ट लेना है रेस्ट लेंगे, और जिस तरह से उसकी वजह ढूंढकर, जो हमने एक वीडियो में बताए थे कि कई वजहों से सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, उसकी वजह ढूंढकर उसका इलाज करेंगे तो ये इलाज हो सकता है। हम चाहते हैं कि अगर कोई शख्स इस्लामिक तरीके से इलाज करने का सेंटर कायम करना चाहता हो तो हम वहां आकर लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग इसमें तैयार हैं तो अगर ऐसा कोई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम ये आपको बता दें कि कोई वेंटिलेटर की, कोई दवाओं की, कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, कोई डायग्नोस्टिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसका इलाज 3 दिन में कर सकते हैं।
हाँ, जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनके सीने में शायद ज़्यादा बलगम भरा हो, उसका इलाज अगर 3 दिन में नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर उनका भी इलाज हो जाएगा। शुक्रिया।